Hello, 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 hello. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Hope everybody is fine. Today, my t shirt is totally different. It is unisex t shirt. So, this is my daughter's t shirt. I don't have anything. I don't own anything like Jyoti Bosu. So, Jyoti Bosu lived for many years and he has served Bengal close to 35 years plus another political life. So he doesn't have the bank account and he doesn't have anything for that matter. So সর্বহারার নেতা জ্যোতি বসু হচ্ছে যে সর্বহারার নেতা। ওনার কাছে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না, ওনার কাছে কোনো পাসবই ছিল না, উনি ব্যাংক কি তাও জানতেন না। জ্যোতি দাদা, similar way, I don't have any dress. This is my daughter's t-shirt. But this is unisex, nice, very nice. Otherwise, I don't own anything for that matter. So, I have to respect my daughter because she's my daughter, and so whatever I do, so genetically and hereditarily, and if I die also tomorrow, she will have a right for everything. That is what India, nice thing. But after Jyoti Bosu, democracy has to survive, right? Only t-shirt has changed now. This Lal Jhanda has converted to Nil Jhanda. well. लाल झंडा नील झंडा हो गया, लेकिन डेमोक्रेसी है। कैसा है, क्या है, नहीं है, वो तो हमको भी पता है, आपको भी पता है, हमसे ज़्यादा आपको पता है। फ्रेंड्स, टुडे आई एम not in a proper shape to discuss many things, but I had a lot of things in my mind that I want to speak on Rabindranath, and I want to speak on Albert Einstein, I want to speak on Aristotle and all gurus of Aristotle also. There are people around the world, 13th century, 14th century, 15th century, 16th century, 17th, 18th, 19th, 20th century, and 21st century. Every century has produced a good mind, right? And people are influenced by the good minds. मैंने जो बात कर रहा था, हर एक सेंचुरी में देखो, जब तुम तकलीफ में हो, कोई ना कोई आके आपको मदद किए है। सेम वे जब समाज तकलीफ में होती है, कोई ना कोई मदद कर देते हैं। अच्छे इंसान, 500, 600, 700 साल का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें समझ में आता है। अच्छे इंसान शांति का बात करता है। वो शांति नहीं है। हमारा देश पे बहुत सारा इंसान का नाम शांति है। वो लड़का का भी नाम है, लड़की का भी नाम है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है, बहुत कंफ्यूजिंग। वो यूनिसेक्स है, शांति। और शांति इधर आओ, अभी एक क्लास में 2 बच्चे का नाम, एक लड़का का नाम शांति है, लड़की का नाम शांति है, तो क्या होने वाला है? दोनों ही आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा। एक शांति देवी आ जाएगा, लड़की शांति देवी, एंड लड़का शांति। सो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ को लेके हम बंगाल में बचपन में बहुत मजाक होते थे। क्लास में चुटकुला सुनाते थे। आजकल का दिन में जैसे मीम्स होता है, बोलता है रविंद्रनाथ के बारे में बताओ, तुम जानते हो क्या रविंद्रनाथ के बारे में? कोई बोलता है हमारा वो दाढ़ी वाला जो है ना, दाढ़ी वाला। सो पीपल यूज्ड टू क्रिटिसाइज हिम। व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन रविंद्रनाथ एंड गोट? गोट, रविंद्रनाथ का भी दाढ़ी है, गोट का भी दाढ़ी है,
रविन्द्रनाथ का दाढ़ी है, गोट का दाढ़ी है, सो दैट गोट इज इक्वल टू रविंद्रनाथ एंड रविन्द्रनाथ इज इक्वल टू गोट। अच्छा, एक ही लॉजिक में, एक ही पॉइंट में कहानी खत्म। साफले साफले, people are there, they are very smart, and in one word they will straight away equate Rabindranath is equal to goat. The way present Congress people and the other people in Bengal, they are equating Rabindranath is equal to Narendra Modi. No, they are not telling Rabindranath is equal to Narendra Modi, no. When Narendra Modi Saab is growing his beard, people of Bengal used to criticize him, the intellectual. देखो देखो देखो, मोदी जी रविंद्रनाथ बनना चाहता है, उसको दाढ़ी रविंद्रनाथ जैसे है। No, that time they are not telling that Modi ji is equal to रविंद्रनाथ। तो रविंद्रनाथ इज इक्वल टू मोदी जी तो हो नहीं सकता है, रिवर्स थ्योरी तो नहीं हो सकता है। वन हैज टू लिव टू मिमिक समबडी, राइट? सो रविंद्रनाथ इज ट्राइंग टू पोर्ट्रेट हिमसेल्फ, नो, not Rabindranath is trying to portray. Modi ji is trying to portray himself as Rabindranath, as an intellectual. That is what the objection of so-called Bengali people. But जब गोट का बात होता है, गोट भी जिंदा है। गोट is equal to Rabindranath. So friends, this was an interesting thing in life. There are many things, many people, and I talked about the dimension part. Which dimension you are in? Like, people talk about I am a drunkard, right? Early morning drinking alcohol. Oh, it is early morning drinking alcohol or evening drinking alcohol. It is the Western culture. We are pure non-alcoholic person. I personally non-alcoholic. I am totally waterian, not Eucherian, waterian, full water, शुद्ध पानी जिसको बोलते हो, आरओ वाटर, घर पे लगी हुई है, बस एक बार इंस्टॉल कर दो, मशीन ऑन करोगे तो आरओ वाटर आता है। नॉट द बॉटल वाटर, नॉट न गोल्ड प्लेटेड वाटर और गोल्ड मिक्स्ड वाटर और मिनरल वाटर। पानी भी देखो कितना टाइप का पानी होता है, कितना टाइप का पानी होता है। 10 रुपया का बोतल होता है, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 10,000 रुपया का, जिसमें गोल्ड मिक्स रहता है। हम नहीं पीते हैं, वो अमीर वाले पीते हैं, बहुत अमीर पीते हैं। उसमें गोल्ड अंदर जाएगा तो बॉडी का अंदर में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, आपका आत्मा को बहुत शांति मिलता है। आपको हाथ पे अंगूठी पहन के क्या होएगा, क्या घंटा होएगा, आप गोल्ड वाटर पियो, बॉडी का अंदर में जाता है, एकदम नैनो पार्टिकल जैसे काम करता है, नैनो इफेक्ट। जैसे गाड़ी में गरीब का गाड़ी ऐसे ही पेंटिंग हो जाता है। सब कितना लोगे पेंटिंग करने के लिए, गाड़ी पुराना हो गया, दिस कार इज ओल्ड, प्लीज पेंट दिस कार, सब 20,000 रुपया, 25-30,000 रुपया लगता है। बट इफ यू डू द नैनो पार्टिकल शाइनिंग करना चाहते हो, इट वुड कॉस्ट यू 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज। अब एक BMW कार को पेंट करने जाओ, नैनो फिनिशिंग करने जाओ, 2-2 लाख रुपए खर्चा होता है। बट गरीब आदमी को क्या घंटा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता कुछ नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? हमारा घर का बाजू में आदमी का 4 BMW कार है, क्या फर्क पड़ता है? क्या उसके घर में 10 कुत्ता है, बट हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
क्यों फर्क पड़ना चाहिए? डेमोक्रेसी है, तुम्हारा राइट है, पैसा कमाने का तुम्हारा अधिकार है। अधिकार है, अधिकार है, अधिकार सबका अधिकार है, लीगल अधिकार रहता है, लीगल। फ्रेंड्स, मैं सोसाइटी का बात ही कर रहा था। सोसाइटी में देखो सब कुछ होता है, एक ही समाज, एक ही दिन, एक ही बिल्डिंग, 200 फ्लैट, किसी फ्लैट में किसी का घर पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, किसी का फ्लैट पे डेथ हो गया, किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का बच्चा टाट्टी कर रहा है, किसी का कुत्ता भौंक रहा है, कि कोई किसी का विंडो से पानी गिरा रहा है, सब नीचे वाला चिल्ला रहा है, अरे बाबा क्यों पानी मारते हो इतना, हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे। कितने सारे चीज होता है। ये छोटा सा दुनिया, छोटा सा बिल्डिंग देख लो, एक मिनी पार्लियामेंट जैसे है। मिनी पार्लियामेंट जैसे हर एक फ्लैट पे एक एमपी बैठा हुआ है, सब वेबिनार में बोल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगा, डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा, सब कनेक्टेड है। टॉप फ्लोर में प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, एकदम ग्राउंड फ्लोर में प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। वेल 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 वेल, सो एवरीबॉडी विल हैव से टू स्पीक। पार्लियामेंट सेशन जैसे होता है, ऐसे भी हम कर सकता है, ऐसे भी हम कर सकता है। सबको 5-5 मिनट दिया जाएगा, देश के बारे में बताएंगे। लाइव सेशन होना चाहिए, लाइव सेशन होना चाहिए। पार्लियामेंट में कितना फाइट होता है, विधानसभा में कितना फाइट होता है। इससे अच्छा है इफ ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, इफ दे आर सिलेक्टेड बाय द पीपल, बात ही तो करना है, तो ऑनलाइन वेबिनार में करवा दो, लाइव करवा दो, फेसबुक में करवा दो, व्हाट्सएप पे करवा दो, जिसका जो मर्जी है देखे, नहीं देखे। जैसे मैंने बताया था, इलेक्शन को ऑनलाइन करवा दो, अच्छी वेबसाइट बनाओ, अच्छा वेबसाइट बनाओ। IRCTC जैसे नहीं है, अच्छी वेबसाइट जिसमें हर एक टेरिटरी हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए, स्टेट वाइज, जोनल वाइज, और जो MP सीट्स होता है उस एरिया वाइज, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हो, उसमें जाके लॉगिन करके आपको आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आप सर्च करो, सर्च करने के बाद आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड देके लॉगिन करो, OTP जनरेट करो, वोट का टाइम में वोट दो, घर पे बैठ के, टॉयलेट पे बैठ के वोट दो। I want one day people are giving votes sitting inside toilet. हो गया, मतलब वोट दे दिया टॉयलेट का अंदर में साइलेंटली, कितना अच्छा होता है, कितना सुकून मिलता है, कौन जाता है। देखो, अमीर आदमी वोट का लाइन पे कभी खड़ा नहीं होता है। वोट का लाइन पे जाएगा, कैमरामैन ऑल मीडिया वाला जाएगा, सर कैसा लगा वोट देने के बाद, अच्छा लगा ना, अच्छा। आप पहली बार वोट दे हो क्या? पहली बार नहीं, मैंने जब एक्टर नहीं था, हम भी लाइन पे खड़ा होते थे, बट आज एक्टर बन गया तो तुम आ रहे हो, इसीलिए तुम मेरे को देख रहे हो। देखो, दो चीज होती है, एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है। क्यों देखता है? एक तो बहुत पॉपुलर आदमी होता है, अदरवाइज डेली आते जाते रहता है इधर उधर। जैसे मोहल्ले पे हम कुत्ते को भी जानता है, क्यों? वो डेली आता है गेट का सामने, मैं उसको कलर पहचानता है, बिल्ली को भी जानता है, सबको जानता है इसलिए वो डेली आता है, दिमाग खाता है। सिमिलर वे बहुत सारा इंसान होता है, घूमते रहता है, इधर उधर घूमते रहता है।
हो सकता है उसके पास बहुत काम है और कुछ काम नहीं है, वेरी इंटेलिजेंट है नहीं तो बेकार है, दो चीज़ हो सकता है। बट मैं कौन होने वाला हूँ उसको बोलने के लिए, भाई तू क्यों घूम रहा है? वो बोलता है तेरा बाप को क्या जाता है, हम घूम रहा है तो ये मेरा जिंदगी है, ये डेमोक्रेसी है, हम नहीं घूमेंगे तो कौन घूमेगा, तेरा बाप घूमेगा क्या? ऐसा भी इंसान बोलने वाला होता है। सो एडवाइस देना बंद करो, मतलब हमें फालतू एडवाइस मत दीजिएगा, ऐसा बोलता है। लेकिन ये एडवाइस कौन सुनता है? जैसे राशिया वाला किसी का भी नहीं सुनता है, उसका बाप का भी नहीं सुना पुतिन अपना ग्रैंडफादर को भी नहीं सुनता है, स्टालिन बोलो गोर्बाचोव बोलो, ये येल्सिन बोलो, लेनिन बोलो, किसी को भी नहीं सुनता है, इतिहास से भी नहीं सुनना चाहता है। जैसे आजकल का बच्चे लोग सलाह अपना बाप को भी नहीं सुनता है। अरे बाप तो कुछ नहीं है हमारा सामने, तो बेकार है आजकल के बच्चे लोग अपना बाप को भी बोल देते हैं। इज्जत तो बहुत दूर की बात होती है, आंखों से आंखों मिला के बोलता है अच्छा है, बहुत अच्छा है, बच्चे बड़ा हो जाता है बाप के साथ, आंखों के साथ आंखों में आंख मिल के बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। इतना तो समझ लेते हो बेटा बेटी जवान हो गया, आपको कोई टेंशन नहीं है। सबका बाप को भी इतना भरोसा होना चाहिए, बेटा और बेटी बाप और माँ को बोल देता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम तो बड़े हो गए, 18 साल हो गया, क्या चाहते हो, हमको कितना दिन तुम बंद में रखोगे? खोलो खोलो दाओ रखियो ना, और बाहिर अम्मा दाड़ा, वो तो बाहिर। और अभी आजकल का बच्चे लोग बोलते हैं द्वार खोल दो, हम बाहर जाएंगे, हमारा मर्जी में जाएंगे। देखो, दिस फ्रीडम इज a very nice thing. I talked about many times freedom. What is the ultimate freedom? For me, I really do not know also what is freedom is all about. When you talk about freedom for a nation, for a country, and freedom for individual, what are the parameters and what are the dimensions for a freedom? I talked about many times this one. I'm not able to yet to understand. Well, individual freedom, I can understand the freedom what South Africa, Nelson Mandela was fighting for, black and white, the uniformity, because human species has to be respected. That is one part. Either I am black and white and semi-black or reddish black for that matter. Everybody is equal in front of law, in front of the parameters. Now the question is over here, who is making laws and what they are applying? So, if you take 1,000, 2,000 years of history, it is right. The white people only rule the blacks, and if you are white, you are beautiful, and the same way, fair and lovely. Okay. If you are not fair, use fair and lovely and be fair. So nobody is telling if you are white, make yourself black and be more beautiful, right? What is dialectically, if you analyze it, right? No, it is very interesting. Like white. मेंडल आप सुन रहे हो? आप सुन रहे हो क्या? नहीं सुन रहे हो? वाटसन क्रिक आप सुन रहे हो? क्या हो गया आपका रिपीटेटिव डीएनए? मेंडल आप सुन रहे हो? वेल मेंडल नहीं सुन रहा है।
जरूर सुनेगा मेंडल। देखो 21st सेंचुरी में भी ब्लैक एंड वाइट इज वेरी मच प्रोमिनेंट। मैरिज में चली जाओ, शादी में चले जाओ, शादी.com में चले जाओ, गोरी लड़का चाहिए, गोरा लड़का चाहिए, गोरी लड़की चाहिए, काली नहीं होना चाहिए, 5 फीट 6 इंच होना चाहिए, पैर सुंदर होना चाहिए, लंबा बाल होना चाहिए, आंखें सुंदर होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, दहेज भी चाहिए, खाना भी बनाना चाहिए, अच्छा अच्छा खाना, पालक साग नहीं, गोभी भी नहीं, मूली भी नहीं, अच्छा चिकन मटन बिरयानी सब कुछ बनाना चाहिए। रात पे प्यार भी करना चाहिए, पैर भी दबा के देना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, सास ससुर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इंडियन पेनल कोड एंड इंडियन शास्त्र में जो फैमिली कॉन्सेप्ट है उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस नंबर देके आप लड़की ढूंढ लेते हो। चलो शादी भी हो जाता है। मेरा बहुत सारा दोस्त 50 60 70 80 लड़की देखने के बाद शादी किया। डेली सैटरडे संडे निकल पड़े। कहाँ जा रहे हो भाई? लड़की ढूंढने के लिए जा रहा है। लड़की, मेरा बेटा का शादी होने वाला है। पूरा दिन जाएगा, खाना खाएगा, चप्पट चप्पट खाना खाएगा, सब कुछ करेगा, शाम को टाइम में घर आ जाएगा, नेक्स्ट वीक फिर जाएगा, फिर खाना खाएगा। पहले राजा लोग जैसे 50 60 शादी कर लेते थे, हाथी लेके निकालते, हाथी। चलो जैसे आप निकले कहाँ से? राजस्थान से निकले, जयपुर से निकले, जोधपुर गया, जोधपुर से आगे जैसलमेर गया, जैसलमेर से आगे ऐसा धुकू दिल्ली में क्रॉस किया। दिल्ली में 2-3 जगह में मतलब घुसना है, मतलब दिल्ली में भी शादी करके रखा है। उधर से जाएगा, पंजाब की तरफ जाएंगे, फिर घूम के यूपी की तरफ आएंगे। ऑल दोज प्लेसेस दे विल मूव, एवरीवेयर देयर विल बी वन वाइफ एंड इट विल टेक 7 days। हाथी भी परेशान हो जाता है, हाथी एलिफेंट भी, घोड़े भी परेशान हो जाता है। राजा कहाँ कहाँ घुसता है। दोस्त, मैंने मुगल पीरियड का इतिहास सबको बताया। बाबर हुल्लू आबार जोर सार्बे औषधे। बाबर, अकबर, हुल्लू मीन्स हुमायून, जोर मीन्स जहांगीर, सार्बे मीन्स शाहजहान, and औषध मीन औरंगजेब। बाबर हुल्लू आबार जोर सार्बे औषधे। बांग्ला, it is Bangla. Bengalis are very much innovative in nature. अपना अपना डिक्शनरी बना लेते हैं। जैसे आपने पीरियोडिक टेबल को याद रखने के लिए अपना तरीका बना लेते हो, बहुत सारा चीज़ को याद करने के लिए बहुत तरीका बना लेता है। हर एक बंदी एक एक तरीका बना लेते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, आप कैसे याद रखते हो? सब कुछ याद होता है, मतलब हर एक का हर एक तरीका पता चलता है। जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एवरीबडी नोज दोज काइंड ऑफ यूनिवर्सल फॉर्मूला। उसके लिए भी एक डिक्शनरी होना चाहिए। हाउ टू मेमोराइज थिंग्स, समझ रहे हो? हाउ टू मेमोराइज थिंग्स, दोज आर कोड वर्ड्स, इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड आपको एग्जाम के टाइम में काम देता है, बहुत काम देता है। तो मैंने बताया था ये 5 बाबर हुल्लू आबार जोर सार्बे औषधे, दैट इज बाबर, अकबर, हुमायून, जहांगीर, शाहजहान, औरंगजेब। 6, इट इज ए बेंजीन स्ट्रक्चर। ओके, 6 जनरेशन, करीब 39 शादी, करीब 75 बच्चे,
39 वाइफ, 75 बच्चे। वो इतिहासकार लिख के गया, कितने सारे इलीगल बच्चा है उसको तो हिसाब नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हुआ है। तो राजा लोग जब शादी करते थे, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, सात सात, आठ आठ, कभी कभी एक जगह में रहते, नहीं तो जब राजा निकाल पड़ती थी तो उसके अंदर में हो सकता है, उसके अंदर में डिक्शनरी डायरी मेंटेन होता था। डायरी, दे यूज्ड टू मेंटेन डायरी। ओके, माय वाइफ इज देयर इन वन in Jaipur. Okay, let's make a plan, right? I'll go and stay there for few days, and Jodhpur, Jaisalmer, then Delhi, then I'll go to the south side. It will take a little longer time, and I stay there for 1 month, and I'll move around, come to Hyderabad, and then go to all those places wherever wives are there. Beautiful, beautiful wife, and they will be waiting for their king husband to come. आइए 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 आइए, स्वागत है, स्वागत। देखो, हमारा राजतंत्र कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। अयोध्या देखो, राम ने वनवास चला गया 14 साल, भाभी जी को लेके चला गया, छोटी सी बात को लेके चले गए। जैसे दुर्गा भी कभी कभी मायके चले जाते थे। कितना अच्छे है, देखो कितना अच्छा है। 2 एग्जाम्पल देखो, दुर्गा, लक्ष्मी, कार्तिक, सरस्वती। शिव थोड़ा सा टेढ़ा थे, बेवड़ा भी थे, लेकिन ठीक थे। देखो, अभी भी हमारा 21st सेंचुरी में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इफ़ यू आस्क एनी गर्ल व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू नीड, दे विल रेफर फ्यू थिंग्स। शिव जैसे पति होना चाहिए, शिव जैसे, कृष्णा जैसे उसका आंखें होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए, शिव जैसे कलर होना चाहिए। मतलब द ट्राइंग टू कोरिलेट बिटवीन शिव एंड शिव एंड कृष्णा का कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, बट शिव का कैरेक्टर होना चाहिए। बट शिव वॉज वेरी डेडिकेटेड टू वाइफ लाइक एनीथिंग। थोड़ा सा बेवड़ा था, लेकिन एकदम डेडिकेटेड था। कृष्णा इंटेलिजेंट था, बट समझ रहे हो, बचपन में वही पिक्चर देखता था, ऊपर पेड़, नीचे पानी, कृष्णा ऊपर, नीचे रानी, नानी, भाभी जी, ऑल काइंड ऑफ भाभी जी। मॉडर्न डे, इफ यू एनालाइज, one guy is having this many numbers and this guy is sitting on a पेड़, right? No, कोई लड़का ऊपर बैठा हुआ है, नीचे 10, 15, 20 लड़की है। क्या होने वाला है? हम करे क्या रामलीला, तुम करे तो प्रेम लीला। ओ थियोरी नहीं चलेगा। हम करे तो कैरेक्टर ढीला। People, lot of times they say that this kind of thing. Well, in society, if you try to analyze our God and Goddess, it is full of ideas. Well, you buy those ideas or reject those ideas, doesn't matter, but at the end of the day, early morning, you'll have nice satisfaction. Your oxygen level will be increase by a little bit, because you smile, you laugh, you understand what it is there. Life is very interesting. That's why you should study our history, either war history, Nobel Prize, Nobel history, history of science, biography, many things, right? One I need to study to get little idea our civilization,
individual life struggle, many things, right? That is going to give little idea. Some Puranic kahini, as I have told you, Durga, Lakshmi, Saraswati, and पहले ज़माने में एजुकेशन कैसा था, पॉलिटिक्स कैसा था. इफ़ यू कैन गिव द पोर्टफोलियो ऑफ ईच सरस्वती एजुकेशन डिपार्टमेंट, यू कैन एनालाइज द कैपेबिलिटी ऑफ सरस्वती एंड द विजडम ऑफ सरस्वती. कितना इंटेलिजेंट थे. आज का दिन का कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर को पकड़ लो, सिमिलैरिटीज़ क्या है. फाइनेंस मिनिस्टर गणेश को पकड़ लो, आजकल को फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट. महिषासुर को पकड़ लो, शिव का तांडव को पकड़ लो. शिव का तांडव का पकड़ कोई मॉडर्न डे का नेता के साथ सोचो, पुतिन एंड लाइक स्टालिन और हिटलर लाइक काइंड ऑफ थिंग. शिव तांडव कर रहा है अभी. क्या उसमें हाथ पे क्या है, तलवार है, झोला है, क्या है. बट आज का दिन पे जो नेता, जो पॉलिटिकल लीडर है, उसको हाथ पे क्या है. डिप्लोमेसी को अगर पकड़ लो, नारद को पकड़ लो, नारद मुनि को पकड़ लो, शकुनी मामा को पकड़ लो. शकुनी मामा, मामा मामा, मामा, आहा, भंजा. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. इफ़ यू रीड रामायण एंड महाभारत, मैं सबको बताता हूँ, रामायण महाभारत अगर थोड़ा पढ़ लिया, you will be very politically sound. For that matter, you need not go for any history or geography or for that matter anything. पढ़ लो रामायण महाभारत, पढ़ लो पुराण का 2 कहानी पढ़ लो, अब अच्छे पॉलिटिकल लीडर बन जाओगे. एंड टॉप ऑफ दैट तड़का जो है, तड़का गीता. आह, गीता, गीता पढ़ लो. गीता माने गीता, 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 गीता पढ़ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर. यू बिकम PhD इन पॉलिटिक्स, PhD इन पॉलिटिक्स. रामायण, महाभारत एंड गीता. वो गीता को कौन पढ़ा था? जैसे मैंने बताया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ओपेनहाइमर ने पढ़ा था भगवत गीता. ब्लड इन माय हैंड, ब्लड इन माय हैंड, आई एम द डिस्ट्रॉयर. आई एम द डिस्ट्रॉयर. जस्ट सून आफ्टर अमेरिका charged 2 atom bomb to Hiroshima and Nagasaki, Oppenheimer was not knowing at all what is happening. That is what his latest statement. Before his death, he has confessed that he was not knowing exactly. Okay, he knew that atom bomb is making because Albert Einstein was very much there. It is his formula. He is the grandfather and father, and Oppenheimer is father. He knew there are 1,30,000-40,000 researcher and technician and Jhadubala also. They are working day and night. Even though history has written that nobody knows that what was happening in Manhattan Project. Even Albert Einstein doesn't know. Even he has written later that there is a need of atom bomb. I told it is again backstory. He was forced to write this letter because in latter stage of his life it is very much evident. His clarity of thoughts can be seen on after 1950s or 1945, 6 August. He has realized that how he has been used by somebody. Same thing Oppenheimer, Richard Feynman, I talked about those issues, right? So Albert Einstein is father and grandfather and father of, because he is making the formula, he is the root, writing later. So germination stage. And Manhattan Project is another growth stage, right?
log phase or developmental stage, right? And flowering stage is something, right, is when atom bomb is making, right? So finally in stationary stage, and it is fully mature. 1945, Second World War also finally in full peak. American administration charged in the stationary stage. And the decline stage, when 76-77 million people died in Hiroshima and Nagasaki. That is the decline stage of. This is a bacterial growth curve. That is what I was explaining, that you can use this bacterial growth curve in many places. It's a good simulation, right? And a nice equilibrium or nice concept you can have. You use this model in business and development, you use it anywhere in your life and your growth, own individual growth and your mental status, everywhere you can use the bacterial growth curve. It's a fantastic one. Time versus development. Good things. Friends, I want to finish this thing by one small poetry. I will come up with another video, because my morning when I started Rabindranath and Albert Einstein, I had a lot of things in my mind. I was about to talk about what is the concept of in life, society, and many things. Albert Einstein and Rabindranath, because they met not once, twice. Albert Einstein visited India and Rabindranath visited Rabindranath in Berlin. Berlin में अल्बर्ट आइंस्टाइन रविन्द्रनाथ को मिल रहा है, and they had a lot of exchange about human minds and many things. The way we say, I exist, therefore I am. So about the truth and beauty, society, many things they have talked. There are opinion of thoughts I'm going to express, but I want to finish this video with one of the beautiful song of Rabindranath Tagore, that everybody in this world, what is the objective of life at the end of the day? आप किसके लिए जीते हो? किसके लिए जीते हो? इल्सा मच्छी खाने के लिए, रोहू मच्छी खाने के लिए, बिल्ली पालने के लिए, कबूतर पालने के लिए, किसके लिए? देखो, सबका मन में अच्छे अच्छे भावना होता है. रविन्द्रनाथ का मन में भी अच्छा भावना था. तो क्या था, मैं वही बात कर रहा हूँ. मैंने वो एक छोटा सा वीडियो बोल के ये कहानी ख़त्म करना चाहता था. रविंद्रनाथ का जो गाना है, तो वो मौने रेखो, ये गाना सब सुन चुके हैं, लेकिन मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ. तो वो मौने रेखो, तो वो मौने रेखो, कहाँ है गाना? If I am not getting, let me come back to you about this song. Probably I need a second for. Well. তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে, তবু মনে রেখো, যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়, নব প্রেম জালে, মনে রেখো, ও তবু মনে রেখো, যদি থাকি কাছাকাছি, দেখিতে না পাও ছায়ার মতো, আছি না আছি, মনে রেখো, ও তবু মনে রেখো, যদি জল আসে আঁখি পাতে, যদি জল আসে
যদি পড়িয়া মনে ঝলো ঝলো জলো নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে তো মনে রেখো তবু মনে রেখো যদি জল লাগে আঁখি পাতে একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে তবু মনে রেখো একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে মনে রেখো যদি পড়িয়া মনে ছলো ছলো জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে তবু মনে রেখো। Very nice, very nice song by Rabindranath. This is actual voice of Rabindranath, and many times I have tried to sing because sometimes the lyrics are nice. Tobu mone rekho is today in this Mother Earth, whoever is surviving, right? It is everybody wants their after their death somebody is going to recall maybe their next generation or the society if you are doing good job, right? Like Tagore today, it's almost many years, close to 150 years that also Rabindranath is there in our life, your day-to-day basis activities, whatever you do, Rabindranath. What Rabindranath was trying to tell over here that okay, after doing so much, he is trying to put an appeal in front of the future generation, whoever will be coming, they should recall and remember him. Which means that everybody is in their inner sense, जो मैं बोलना चाहता हूँ, इनर सेंस में चाहता है उसको मरने के बाद भी कोई याद करे, अच्छे काम करके गया, इंसान अच्छे थे। आज भी बोलता है जैसे रविन्द्रनाथ बहुत अच्छे इंसान है, मानवतावादी है, दया है, प्रेम है। रविन्द्रनाथ है तो सब कुछ है। रविन्द्रनाथ है तो घटी है, बाटी है, घर है। देखो कितना इंसान रविन्द्रनाथ को प्यार करता है। मैं जानने वाला का अंदर में बोलता हूँ रविन्द्रनाथ के अगेंस्ट में तुम बोलोगे तुम लोग को मार डालेगा। जैसे कम्युनिस्ट का, जैसे कार्ल मार्क्स के अगेंस्ट में बोलोगे तुमको मार डालेगा। सिमिलर है रविन्द्रनाथ के अगेंस्ट में बंगाल में बोलोगे तुमको मार डालेगा, बोलेगा ये क्या बोल रहे हो भाई, रविन्द्रनाथ मेरा है, मेरा है, मेरा है, हमारा आत्मा है। देखिए दिस इज ट्रस्ट, belief. I don't have any problem for that matter. I maybe have some difference of opinion about individual, but this should be my personal opinion. That should not be impacted towards anybody. If you believe in freedom, Rabindranath always advocating freedom, justice, your knowledge and wisdom. Chitta jitha bhoy shunno grihir prachir and all those things, where the mind is without fear, where the head is high. ऐसे हेड ऊंचा करके चलने के लिए रविन्द्रनाथ बोले थे। तो रविन्द्रनाथ का अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। तो रविन्द्रनाथ अगर खुद जिंदा रहते तो शायद कुछ नहीं बोलते थे। प्रॉब्लम हम लोग का अंदर में, हमारा चेला लोग के अंदर में है। जैसे जीसस क्राइस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं था, गौतम बुद्ध का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाद में जो मोहम्मद का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाद में जो आया, जो चेला लोग उसका प्रचारक बन गया, वो हीरो बन गया, हीरो हीरो हीरो। जैसे क्रिश्चियनिटी का प्रचारक ब्रिटिश है, ब्रिटिश एकदम कड़क कड़क जिसको बोलते हो, मोहम्मद भी पकड़ लो, ऑयल ऑयल ऑयल। गौतम बुद्ध, इट्स ए स्ट्रिंजेंट पॉलिसी।
बहुत स्ट्रिंजेंट है, उसको मानना बहुत कष्ट होता है, टफ होता है, एंड डाइल्यूट हो गया. बट क्रिश्चियनिटी इज़ वेरी नाइस. चेंज होता है, बात बात में चेंज हो गया. बट ऐसा नहीं है मसाला जैसे साउथ का डोसा. इफ इट इज ए साउथ इंडियन डोसा इज कमिंग टू नॉर्थ इंडिया, इट विल बी ए काइंड ऑफ ए not masala dosa, it will be a kind of a rice bhurji kind of thing with masala dosa. You won't understand what it is, right? Similar way. Nice dosa. So friends, so what I was trying to tell about Albert Einstein and Rabindranath. Albert Einstein also visited India, I told you. After that, Rabindranath visited Albert Einstein in Berlin in 1930. I want to talk about few things over here, meeting Rabindranath, Albert Einstein, what is the relevance today. Probably everybody is aware, all intellectuals, they know when Rabindranath met, what they have discussed, many things. This is not my purpose of telling you all. My purpose of telling you that Rabindranath and Albert Einstein has got little commonality in terms of humanity, peace and tranquility. They do not have any kind of objection towards those fundamentals. They believe in as long as your existence is there, and it's very much like I think, therefore I am. This is what the philosophy from the seniors, they have taken it. Those philosophies I talked about. Let's talk about few issues, right? So, like I said, that both Albert Einstein and Rabindranath is very much influenced with Aristotle philosophy. And that is true that Aristotle, his philosophy of, okay, even Aristotle, before that, your Aristotle was influenced by many. Let me read out things, right? Aristotle was born in 384 BC in Greece, okay, and died 322 BC again in Greece. Nationality Greek, influenced by Kant, Thomas Augustus, and Descritis, Nicolaus Copernicus, Hubbles, and more. Okay, this is again he's influenced by many: Pluto, Socrates, Pythagoras, Hercules. Those are the people, like, if you take their philosophy, they are first of all very much human and scientific, and they have a lot of ideas in the scientific and also philosophical field. And Albert Einstein and Rabindranath, even they are much more younger than the name what I have referred over here. But luckily, Albert Einstein is, Rabindranath is meeting Albert Einstein, two great minds meeting together, and the commonality, they are not in favor of war, number one. Their idea of, they have totally, I have a lot of videos to say Albert Einstein is speaking against war. That is what I have, those video documentation. I don't know how long this video will be, but how relevant those would be, but I want to put some bullet points over here. Rabindranath also is getting Nobel Prize in 1913. Remember one thing over here, when Rabindranath meeting Albert Einstein has not got the Nobel Prize. He got Nobel Prize in the year 1920. But Tagore is getting Nobel Prize in 1913. So people might be thinking that, well,
Nobody knows that Albert Einstein will be getting Nobel Prize, but two great minds meeting together, discussing, talking about the peace, humanity, tranquility, the relationship between matter and many things. It is talking about you is important in life as long as you are surviving or you are living. That's why you can analyze your own ways, the whole world, the way you want to see it. Your objective towards a room like many chairs and tables, bed and other things. This is your own understanding. So if you are not there, those things are very much meaningless in respect to you, which means they are very much in support of something that if something has to be praised or appreciated, it is human only they can appreciate and praise. There is no second thought or second dimension over it. Many things Rabindranath has tried to explain in a very poetic way, and his humanity in life, and Albert Einstein humanity in life. Somewhere he is trying to say all those things in a Pythagorean way of doing something, because Rabindranath is again, he's from different background or the qualification. He might have wisdom, but Albert Einstein, his IQ level and thought process very much scientific, and his critical analysis can be taken into consideration very seriously, and he's a serious thinker that time. Let me again talk about Tagore. Tagore and Rabindranath and Tagore. This is one interesting part. I'm going to recite one of the poetry that is by Tagore, few lines, right? So where this poetry is gone, 1400 साल, Rabindranath is writing about the year 1400, Bengali Sal, Bengali year. Now he's trying to talk about he is thinking in very much in advance that 1400 साल आएगा तो क्या होएगा. So he's thinking about his write-up, that what will be fate of his whatever he has written. वो जो लिख के गया है उसको क्या होने वाला है. इतना सारी चीज़ लिख के गया है ना. सबका मन में होता है इतना सारा, जैसे आप छोड़ के जाते हो, इतना प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हो मरने के टाइम, बेटा ठीक से देख लेना प्रॉपर्टी, सही सलामत, इसको बेच के दारू पी के ख़त्म मत करना. ऐसे भी बोल के जाते हैं मरने के टाइम, बिकॉज मरने के टाइम क्या होता है, स्वर्ग से तो आप नहीं दे, पेंशन मिलता है ऊपर से, लेकिन आप सब कुछ देख नहीं पाते हो, संभाल नहीं पाते हो, चेक बुक में साइन नहीं कर पाते हो, वो पैसा को खा नहीं पाते हो. तो बेटा को बोल के जाते हो, बेटी को, ओ बेटी, चलो बेटी को मिले नहीं मिले हो तो दूसरी बात है, लेकिन बेटा को ज़रूर बोल के जाते हैं, भाई इसको संभाल के, भाई नहीं बेटा संभाल के, इसको संभाल के रखना. 1400 সাল, let recite this. আজি হতে শতবর্ষ পরে কে তুমি পড়িছ বসে আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে. আজি হতে শতবর্ষ পরে, আজি নববসন্তের প্রভাতের আনন্দের লেশ মাত্র ভাগ. আজিকার কোনো ফুল বিহঙ্গের কোনো গান, আজিকার কোনো রক্তরাগ, অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে তোমাদের করে আজি হতে শতবর্ষ পরে. তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার, বহি বাতায়নে সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায়, অবগাহী ভেবে দেখো মনে, একদিন শতবর্ষ আগে চঞ্চল পুলক রাশি, কোনো স্বর্ণ হতে ভাসি নিখিলের মর্মে আসি লাগে, নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন উন্মত্ত ধীর.
উড়ায় চঞ্চল পাখা পুষ্প রেণু গন্ধ মাখা দক্ষিণ সমীর সহসা আসিয়া তরা রাঙায় দিয়েছে ধরা যৌবনের রাগে তোমাদের শতবর্ষ আগে। যেদিন উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে কবি এক জাগে কত কথা পুষ্প প্রায় বিকশিত তুলিতে চায় কত অনুরাগে। একদিন শতবর্ষ আগে আজি হতে শতবর্ষ পরে এখন করিছে গান সে কোন নূতন কবি তোমাদের ঘরে। আজি বসন্তের আনন্দ অভিবাদন পাঠায়ে দিলাম তার করো আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে। ধ্বনিত হোক ক্ষণস্তরে হৃদয় স্পন্দনে তব ভ্রমর গুঞ্জনে নব পল্লব মর্মরে আজি হতে শতবর্ষ পরে। Well, this is a beautiful song. He was trying to tell many things over here. He's talking about his creation that will be, you can remember, in this century, 14th century, Bengali is trying to, it's not bad that what he has told, everybody wants this part. He's also trying to tell that new poet also will come and the new generation will be writing different poetries in the different areas. He's welcoming them also. It's a good part. I told Rabindranath is a human being, is a humanist and is more of humanist than a political person or a freedom fighter. People try to put everybody into every place. It is not. You cannot place a scientist into a political zone and a poet into political dimension because you cannot do many things in life. It is not possible. You try to analyze your own life that you are busy in your own profession 8 to 5. After that, you are fed up and you come back home and you don't do anything and sleep. Even you, everybody expect that this much you can do rest of your life. Can you imagine? आम आदमी अपना ज़िंदगी में क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं करता है। सुबह में चाय पीते हैं, इसके बाद खाना खाते हैं, डब्बा लेके ऑफिस चले जाते हैं, 8-10 घंटा देके फिर ऑफिस आता है, फिर खाना खाता है, फिर थोड़ा चैटिंग कर लेते हैं, थोड़ा फेसबुक कर लेता है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल दोस्त से गपशप कर लेते हैं, इसके बाद फिर सो जाता है, फिर सुबह होता है, ऐसे करके ज़िंदगी निकाल जाते हैं। पर देखो रविन्द्रनाथ ज़िंदगी में इतने सारे चीज़ किया है, कितना किताबें लिखा है, कितना प्रेस, कितना प्रूफ रीडिंग, कितना दिमाग लगता है हर एक चीज़ में। इट इज़ ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट ईजी जॉब। यू राइट समथिंग ए स्पीच ऑफ फेसबुक में दोस्त में 4 लाइन लिखने के लिए उसमें 10 मिस्टेक होता है। दोस्त लोग बोलता है अरे क्या लिखा, समझ में नहीं आया। वो भी आजकल तो शब्द ऐसा ऐसा आ जाता है तुमको भी समझ में नहीं आता। इफ़ यू टाइप समथिंग, समथिंग विल कम, यू सिलेक्ट इट और डिलीट इट, दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट अर्लियर डेज, कैन यू इमेजिन, nothing was there, no computer, nothing. You have to literally write in hand, go to a press and they will compose each and every word over there, then printing आएगा, editing आएगा, 50 चीज़ होता है। कितना चीज़ करना पड़ता है। प्रेस पे शो भी जाओ, उधर रात पे प्रेस पे शो गया, आपका पोएट्री बुक छाप रहा है, पीछे से चूहा बोलता है क्या पोएट्री लिखा। हम तो गणपति का वाहक है, तुम ज़्यादा मस्ती मत करो, कविता सही ढंग से लिखो। चूहा भी उसको धमक देता है, पोएट को धमक देता है। पोएट सोचता है अच्छा तुम भी हमको धमक दे रहे हो, ऐसा मत करो, हमको लिखने दो, मन का बात बोलने दो। चूहा बोलता है संभाल के, तेरे को भी काट डालेंगे। Friends, Rabindranath and Albert Einstein is meeting together. It's a nice thing, nice gesture. There are two personalities. One is from the science field, another from
philosophical, poetic field, they have the commonality. I told you they're totally against war. Let me again. Uh, Let me share it. This Albert Einstein own voice. If I can able to show you something, it will be more interesting. Many of us probably may not be knowing that Albert Einstein. We should strive not to use violence in fighting for our cause, You but can by listen. non-participation in anything you believe is evil. Albert Einstein is a great man. I don't have any doubt in my mind. Not merely with the technical problem of securing and maintaining peace, but also with the important task of education and enlightenment. Without such freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, no Newton, no Faraday, no Pasteur, and no Lee. Science has provided the possibility of liberation for human beings from hard labor. When the ideals of humanity are war and conquest, those tools become as dangerous as a razor in the hands of a child of 3. We must not combat man's inventiveness and patient conquest of the forces of nature because they are being used wrongly. The fate of humanity is entirely dependent upon its moral development. Well. In this video, Albert Einstein is talking about the peace, humanity. Those things are very much there. In Rabindranath and Albert Einstein had talked about the humanity is the basic. It's talked about many places the morality part. Well, today I don't like to. I have many videos, but I don't like to get into all kind of videos and trying to explain many things. It would be good from my side, but one thing I want to tell you, the thing is today what we are learning right from Albert Einstein. Let me talk about that part. Are you listening Albert Einstein what we are speaking? We talked about Albert Einstein, the greatest mind, but both Tagore, we do, if you do not, even I told in 1930, in the same trip, Berlin, you went to Berlin and you went to Russia. Rabindranath Tagore, 1930, he is going to Russia, his Russia Chithi diary. I have published close to 1 hour 15 minutes video in this Russia Chithi. I have explained each and everything over there. Rabindranath is a great mind, and I told he's having a lot of scattered idea, lot of ideas. He's a man of ideas. Some ideas might be wrong or right. Never mind, but till thinking for the society, doing something that is today's world, who is thinking about all those things? What is going on? You are just watching like in another film, right? Nobody is serious about the war and the consequences. I talked about those issues that can you imagine same thing is happening at your home, at your neighbor's house. Let's say if somebody is powerful and coming and hitting me, stabbing me, how the others will be feeling it. The same exercise, like two countries, Ukraine and Russia is just invading and killing people, bombarding and giving threat to the whole world for no reason. What crime Ukraine has done, I am yet to understand this philosophy of invasion, the audacity of Putin, I am yet to understand. Every time I think, imagine that I am a poor man and my neighbor is a very rich man and he is powerful man. He is coming to my house, even not knocking the door. He is just taking a kind of a grill cutter. He is cutting my main door, coming inside and
finishing everything and just going. Can you imagine? And the whole world is watching in a live show, and Gaurav Samant is coming, standing over there and watching the shows and making all kind of live telecast. The India TV is coming, NDTV is coming, live, all those things. Now this person is coming inside, same thing is happening. I told this war is a big business in this century, and all are benefited, because if you see Gaurav Sound's 15 minutes, 20 minutes after that, a nice advertisement will come. Margo साबुन, चंदन चंदन चंदन, चामेली का तेल का एडवर्टाइजमेंट आ जाता है. I always say that we are bloody hypocrites in this mother earth, right? How much hypocrisy is there even for death also. The anchors, they sometimes they keep all kind of things in their newsroom. Maybe the editor is telling this is a serious news, probably you need to be very careful, right? You should cry a little bit, you should be emotional and charged, and they act accordingly, right? They know. Nowadays all anchors are actors and actresses. They are following somebody. All the world is a stage, and all men and women mere players. They have their existence, and that same philosophy. They use the news anchor room as a dance of floor, right? Somebody will come, this. Achha, today Russia is bombarded Q city and demolished few houses. Now look at the how nicely this laser guided things are hitting this house and burning. Gaurav Sawant is doing pasina pushing, and he's pushing job and inside, and somebody is also there. The Poland side, all the journalists reporting, and BBC, CNN, and doing. I have requested BBC, CNN, please go to Moscow city. If you have guts and audacity, and go and interview Putin, that why you are doing such kind of things. The violation of norms and this whatever UN, NATO resolution, all documented things are there. Why they are not supporting? जैसे हमारे इंडिया में पुतिन भाई को भिजवा दो IAS IPS का एग्जाम देने के लिए. एग्जाम एक बार दे दे, IIT का एग्जाम दे दे, क्या करेगा वो बोलेगा मैं एग्जाम का रूल नहीं मानता हूँ, हमको आंसर ढूंढने के लिए किताब दो, हम लिखेंगे. उसके लिए खाली छूट होना चाहिए, बाकी सब अच्छे एग्जाम दो. सेम थिंग अमेरिका वाला भी बोलेगा आ जाओ IIT का एग्जाम दो. चाइना वाला भी ऐसा ही करेगा. So friends, I don't like to increase this video. This is almost how many? So 1 hour, maybe 10 minutes video. Morning Albert Einstein, I talked about that. What is the relevance today of Albert Einstein? Because those are great personalities, and we must respect the wisdom of Albert Einstein. If we have to respect the humanity, if we have to respect the science, morality, many things are coming into the picture. Otherwise, there is no question of we as a human being in this Mother Earth, our existence is questionable at the end of the day. Because what is more important also, I talked about all the philosophers before, they are also of the same opinion. Humans are the central force of this beautiful Mother Earth, and either to praise it or whether to destroy it. As long as you are there, your existence is there. You can romanticize it and you can destroy it, but the choice is with you. So this Mother Earth has to be restored.
nobody has should take the audacity to have this nuclear threat, because it indirectly it is increasing the pollution level and the lifespan of this mother earth. So can any political leader, let's say, giving nuclear threat, it is his atomic exercise toward this country can be restricted to only this. It should not affect or bother others. If you are even having mutton biryani and chicken biryani at home, your meals should not come to the neighbor house. Can Mr. Putin do that? Well. That is what it is coming to the morality part. We talked about the pollution, global warming, that is what exactly happening. The Western world, many worlds, they want to have the rapid industrialization, many issues they want to have, and but the ultimate sufferer will be these third world countries, the mother earth. If global warming is happening, everybody will be affected. So if you are having a nice biryani at home, that smell will spread everywhere. Okay, that is accepted, but this nuclear threat perception is totally a wrong perception. Nowadays, this hydrogen bomb, there are more powerful bombs, fusion and other things that are happening. Rather than doing this exercise, I think this whole world should come forward, make a kind of a peacekeeping nation. All the nations should have one vision, that is the peace. This war should be deleted. Destroy all the nuclear warheads everywhere across the globe. See to it that this world is a beautiful place. I talked about people are thinking to go to Mars, but Elon Musk is never ever talked about the peace mission. He every day is coming and talking about many issues. I think man like Elon Musk, the world richest person, should come. Bill Gates should come. All the great leaders should come. The whole world should talk about the peace, and the money we are spending for war is divert into development. You see, the world will be a beautiful place. I say, Mr. Putin, if you are spending 20 billion US dollar each day, you support this one day your war money to all the small African country, then some money to Sri Lanka, some money to, if you give 20 billion US dollar to Sri Lanka, his economy will be Changa, it will be Genghis Khan, and Putin, you don't understand that part. But who cares? China must care. I have visited Sri Lanka, I have seen the roads and everything, port all done by China. Now China want to have the interest part. लाओ इतना बना के दिया है तुम्हारा देश पे, सड़क बना के दिया, पोर्ट बना के दिया, क्या हो गया? लाओ पैसा लाओ, नहीं तो हम आपका पाल्टी मार देंगे, पाल्टी. So friends, this economic aggression is a very bad business, and I told about. It was nice before when you have the exchange methodology. When money came into the picture, all equation changed. Exchange method is very nice. मेरा घर पे भैंसा है, भैंसा तेरा भैंसी दे दे. मेरा घर में कद्दू है, तेरा मूली दे दे. मेरा घर में बैगन है, तेरा प्याज दे दे. तेरा घर में नमक है, एसिड दे दे. अच्छा नहीं. पालक साग है तो गोभी दे दे. मूली है तो छोटा मूली दे दे. नहीं है तो मुस्करा दे. तेरा घर में शक्कर है तो मेरा घर में नमक है, दे दे. अच्छा बात है. क्या बताओ, पैसा आके सब कुछ गड़बड़ करवा दिया. I think this whole world should have one currency.
This much I can tell you. One currency, those whole world. There must be one bank and universal bank. Everybody will be using the same currency. Is there any possibility? Well, I can see there is a possibility. But again, I told our human mind is not uh, simple, it's a complex. डोमिनेंस, मैं तेरा दादा बनना चाहता हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई है, बोल मेरे को बड़ा भाई बोल, तुमने बोल क्यों नहीं बोलोगे? बाप ने पहले पैदा किया था, क्यों नहीं बोलोगे? डेमोक्रेसी हमारा सबसे पुराना है, पुराना डेमोक्रेसी है। हमने कितना साल से डेमोक्रेसी को पाल के रखा है। तुम तो नया नया आया है, तुमसे हमने सीखी है। तुम मारामारी करते हो तो तुमसे हमने सीखा है। जैसे कांग्रेसी वाला बोलते हैं हम तो उधर से सीखा, उधर से सीखा, वही तुम सीख के वो बता रहे हो, वही चीज़ तुम कर रहे हो जो हमने पहले कर चुका है, और वाइस वर्सा। जैसे नया नया कांग्रेसी बोलता है अरे हमारा दादाजी तो करके गया, वही चीज़ रिपीट करो, रिपीट रेफरेंस, माई नाना जी, दाना जी, दोज थिंग्स, वट एवर दे हैव टोल्ड आई इको द सेम थिंग। जैसे बहुत सारे नेता बोलते रहता है, स्पीच देके बोला अच्छा प्लीज रेफर रविंद्रनाथ, प्लीज रेफर अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्लीज रेफर कोपरनिकस, गैलीलियो, एरिस्टोटल, यू रेफर, फिनिश। Whatever they have told, same thing I am also telling. See how nicely in 1 minute you finish the entire topic. Then thank you very much. This is short and sweet lecture. Sometimes I feel I should refer one person, that please refer Swami Vivekananda. If you want to talk about spirituality, humanity, bhayo, bano, प्लीज़ रेफर विवेकानंद, दैट्स ऑल। लड़ाई का, फ्रीडम का बात करेगा, प्लीज़ रेफर सुभाष चंद्र। और थोड़ा सा और ज़्यादा लड़ाई करना है, डायरेक्ट अटैक में जाएगा, प्लीज़ रेफर खुदीराम, मेटालिटन। अच्छा मास करोगे तो प्लीज़ रेफर जालियोला बाग, मैटर ओवर, रेफर, ओनली रेफरेंस। This is a code word used so that you will be thinking अच्छा 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 कैसे हो गया, क्या हो गया। तो आपको रविंद्रनाथ जानना पड़ेगा। यू कैन गेट इन टू रविंद्रनाथ, पीपल माइट बी नोइंग। फ्रीडम के बारे में बताओगे, फ्रीडम प्लीज रेफर 1947 15 अगस्त, अखंड फ्रीडम और अनफिनिश्ड फ्रीडम 1947। Friends, many things I have been speaking over here. What is more important is peace is more important, education is more important, and this world is facing problem. Our neighbor Imran Khan is facing a lot of problem. He needs how much? 172 or 147 runs to win. He's struggling. I told Islamabad his plane is ready here right now. Anytime he can fly to London Heathrow Airport. The way I have landed in Heathrow Airport 15 years back, and I went to many universities. Imran Khan will be going for sure. His flight is ready. Fuel is refilling. Maybe he will take a chartered plane and he will be flying. I talked about last 74-75 years, whoever, like the Prime Minister of Pakistan has not completed their 5 years term, and Army General have taken over, Army Chief, they're so powerful, 5 years not completed. I talked about the difference between India and Prime Minister or President, the American, sorry, not American. Okay, America is coming by default to Pakistan. I don't know why, what is going on in my mind. Okay, China is also coming. Anyway, it's a good thing that water came in between. It's very nice. I'm so not sorry. Why should be sorry? Because if you love somebody, automatically the name will come. So, why? This, I want to see the drama of Pakistan, the Imran Khan, what he's trying to say, and whether
he is also influenced to Mayabad. Now he's talking about India. I told Imran Khan, talking about the Asian Union, Imran Khan, I referred, he should talk about peace, tranquility, भाईचारा की बात करेंगे. मोदी जी जरूर जरूर आपको सपोर्ट करेंगे. हमारा भाई है तुम, भाई आ जाओ, क्रिकेट खेलता है. My wish is there one day there will be a nice cricket match where Modi ji and Imran Khan in one team and rest Sri Lanka, Bangladesh. हसीना भी मान जाएगी. सब इकट्ठा खेलेंगे. 25 कंट्री, 2 टीम बनाएंगे, इंडिया ए एंड इंडिया बी. एक T20 खेलेगा, एक 50 ओवर का मैच खेलेगा. एशियन यूनियन को बात किया मैंने, और यूरोपियन यूनियन अनदर टीम में रहेगा. चाइना सब रहेगा. चाइना वाला तो हमारे साथ है, अमेरिकन वाला, रशियन वाला, ये लोग अनदर टीम बना ले भाई, हम मैच खेलेंगे. एटलीस्ट जैसे T20 जैसे 2-3 मैच होना चाहिए. वर्ल्ड में जितने सारे लीडर है सबको बुला लो, क्रिकेट खेलो साहब. साहब एक ओवर खेल लो सब मिलकर. हम क्रिकेट का रूल भी बदल डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहले आएगा मतलब कौन कौन आएगा, मान के चलो बैटिंग कर गया, चलो हमने बैटिंग ले लिया, इंडिया वाला बैटिंग ले लिया. मोदी जी या इमरान खान पहले एक ओवर खेलेगा. बॉल कौन करेगा, उधर से उधर से उधर से. चाइनीज प्रेसिडेंट बॉल करेगा पहली ओवर. वो चाइनीज तो चाइनीज वाला तो हमारे साथ है. भूल क्यों जाता हो. अरे यार टीम ऐसे नहीं होता है, ऐसे टीम नहीं होएगा. चलो हमने बोला है, फिर से स्टार्ट करता है. ठीक है, फिर से हम स्टार्ट करता है. 25, 24, 25 कंट्री में 2 टीम बन जाएगा. अंपायर कहाँ से होएगा. अंपायर ऊपर से लेके आओ, नारद मुनि को लेके आओ, ब्रह्मा को लेके आओ, विष्णु को लेके आओ, महेश्वर को लेके आओ. कमेंट्री बॉक्स में कौन रहेगा, दुर्गा माँ रहेगा, दुर्गा माँ. शिव रहेगा, शिव शक्ति है, शिव शक्ति. नॉट ESPN नहीं चाहता है, किसी को नहीं चाहता है. सब अच्छा चीज़ आएगा. सो मैंने बोला था क्रिकेट टीम बनेगा तो क्या होएगा, 25 ओवर का मैच लगा लो. तो 25 ओवर का मैच सही है, बहुत सही है. 20 ओवर का मैच अभी क्या हो रहा है, अभी एशियन यूनियन बनेगा तो हर एक कंट्री का एक चलो प्लेयर भी हम 24-25 कर लेते हैं. पहले इंडिया का बैटिंग टॉस हो गया, टॉस होने के बाद इंडिया का बैटिंग हो रहा है. तो पहले बैटिंग करने के लिए कौन आएगा, नरेंद्र मोदी साहब ने ओपनिंग करेंगे. हमारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर पहले वोटिंग. अनदर किसको लेना है. चलो इमरान खान को अभी नहीं लेके आता है. 1 डाउन 2 डाउन मैंने उसको लेके आएंगे. ले लेता है, किसको लेता है, जापान का प्राइम मिनिस्टर. नहीं, इससे अच्छा श्रीलंका का हमने ले लेते हैं. दोनों में कितना, एक ही ओवर खेलना है. सो दैट एक ओवर में मोदी जी कितना रन बना लेगा. उधर से बॉलिंग कौन करेगा, बॉलिंग चलो डाल दो, अमेरिकन का प्रेसिडेंट को डाल दो, जो बाइडेन को डाल दो. मज़ा आ जाएगा गुरु, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा. पहले बॉल गूगली, मोदी जी अच्छा तरीके से खेल लेगा. सेकंड बॉल स्ट्रेट आता है, मोदी जी चौका मार देगा. थर्ड बॉल अभी समझ गया है. अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गया जो बाइडेन, अभी उसको स्पिन करेगा. मोदी जी उसको अच्छा तरीके से खेलेंगे. मिड विकेट का अंदर से जाके एकदम फिर से 4 हो गया. 3 बॉल खेल लिया. मोदी जी बोला रुको थोड़ा, रुको. अंपायर बोल रहा नहीं, ओवर का बीच पे रोकना नहीं. चौथा बॉल डालते हैं, चौथा बॉल फिर से मोदी जी हुक मार देता है. वो हुक
ऐसे बाहर चले जाते हैं, 6 रन बन जाता है। इसका बाद मोदी जी एंड जो बाइडेन के अंदर में आंखों से आंख मिल लेता है, क्या चल रहा है, कैसे तुमने मेरे को 6 मार दिया। मोदी जी जाके बोलता है एक भी IITian नहीं भेजेंगे अमेरिकन में, हमने पॉलिसी बना रहा है, हमने पॉलिसी जापान जैसे पॉलिसी बना रहा है, एक भी IITian जो पास आउट करेगा ना हम इधर ही रखेंगे, इजरायली जैसे इधर ही करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक भी बच्चा नहीं देंगे, तुम्हारा बोलती बंद हो जाएगा, कोई भी डॉक्टर नहीं भेजेंगे, हम इंडिया में इंडिया से किसी को नहीं भेजेंगे, जाना है तो पूरा जाओ, आधा मत जाओ, पूरा चली जाओ, देख दो क्या है क्या नहीं है। जो बाइडेन ऐसे दिखता है, 5वां बॉल फेंको, 5वां बॉल, मोदी जी 5वां बॉल फेंका, 5वां बॉल फेंक दिया, जो बाइडेन ने 5वां बॉल फेंका, वो भी मोदी जी एकदम मारा, ऊपर से मारा, बहुत दूर चला गया, गैलरी के बाहर चला गया। रशिया वाला आया, रशिया वाला इंडिया में आ गया था उस टाइम, क्या बोला, हमको तेल चाहिए, हम तेल लेंगे, तुम सबको बेचते हो, रशिया वाला लड़ाई भी कर रहे हो, अच्छा भाव भी दे रहे हो हम लेंगे, हमको जीने के लिए चाहिए, हम तेल चाहता है लेकिन शांति भी चाहता है। शांति तेल नहीं, शांति तेल नहीं है, जरूरी है, क्या करें, आप रशिया वाला से तेल लेना है तो हमको तो लेना है, वाले वो शांति तेल हो जाए और शांति तेल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलो लास्ट बॉल, 6 बॉल का हमने कर लिया, 6 बॉल जो भी है, 6 बॉल, फिर जो बाइडेन 6वां बॉल मार दिया, मोदी जी इतना जोर मारा, इतना जोर मारा, वो चला गया, कहाँ चला गया, ब्लैक सी में जाके गिर गया, ब्लैक सी, अरबियन सी, प्रशांत महासागर, भारत महासागर अंदर ही चला गया, वो बॉल कभी नहीं वापस होने वाला है। मोदी जी अभी ठान लिया, देश को बचाना है, देश को डेवलपमेंट करना है, नहीं खेलना है, ऐसा नहीं खेलना है, चलाओ भाइयों और बहनों, देश को बचाओ, देश को बचाने के लिए हमको सब कुछ करना पड़ेगा। And Modi ji is doing the perfect thing, perfect job. I like the spirit of Modi ji. कांग्रेसी वाला कुछ भी बोल ले भाई, कुछ भी बोल लो, मोदी जी है, तुम्हारा कांग्रेसी वाला भी प्रेज करता है, कभी कभी भूल भूल में बोल देता है, अरे मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है तब तुम्हारा कितना गुस्सा होता है, अरे बाप रे सोचो गुलाम नबी आज़ाद बुढ़ेपे में कैसा बोल रहा है। बहुत सारा आदमी आना चाहता है कांग्रेस में, कभी कभी शशि थरूर भी अच्छा बोल लेता है, लेकिन उसके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हमको नहीं समझता है। पहले तो क्लियर कर लो, घर का है, घाट का है, आ जाओ, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप बोलोगे तो हमको भी मज़ा आएगा गुलाम नबी आज़ाद आप भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना दिन बोलोगे G20 वो कितना है जी, हाउ मेनी जी, देयर इज नो जी लेफ्ट, ओनली 3G, जीजा जी, मामा जी, सब वही है, चाचा जी है। फ्रेंड्स, I want to finish, it is 1 hour 29 minutes, it is almost 2 hour 10 minutes I have been to this talk, so I want to finish it with a beautiful song. No song today, what is song? Right,
Let me finish with last word of Albert Einstein. I want to finish it. Hear this hymn. Last word of Albert Einstein. I like Albert Einstein. Wait, this is not a video message. I want to show you. Look, I want to show you. Well. Well. This is little music is there. I had another video. Well. Every time I speak Albert Einstein, his childhood, it's full of drama, life. Everybody knows about Albert Einstein. I have nothing to say, and he's a nice man. He's a peace-loving man. So he used to do two things: this peace, biological peace, and also peace message. So I also should do it. You also should do it. Everybody should do it. The whole world should follow few political leader or few scientists, their knowledge and wisdom they should regard and respect. That is what it is. Once again, thank you very much. Thank you very much and good morning to everybody. Bye bye. Take care.